Hi, I'm Avantika and you're watching me on Telly Glam. So Avantika, welcome to Telly Glam. Hi. Thanks for having me. Okay, so Avantika, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे स्प्लिट्स विला में पार्टिसिपेट करने का क्या मकसद था, क्या एम था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? Honestly, I did not like had कोई aim नहीं था particular कि यार मैं जाना है मुझे जीतना है or something like that. I was like never sure कि ऐसा कुछ aim था नहीं. It just happened. It just came in my way very naturally. और जब वो हुआ था I was very like first of all I did not like I wasn't able to process कि अच्छा I am doing this show or am I not doing this show. I was very confused. मुझे because MTV and Spitzler these are like big shows and I've always grown up watching these shows. और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी बट व्हेन आई गॉट टू नो दैट माय ऑडिशन दे लाइक माय ऑडिशन दे वांट टू लाइक they want me to be in the show. It was very shocking to me because I was like, why would they want me in the show? Like they might have like better options than me, but why me? So I think that is where when I already lost the show क्योंकि मैंने ये सारी चीजें पहले ही सोची थी कि why would they want me, तो वहीं पे मैं शो हार गई थी. So it's like it was very shocking, but I had no purpose to be honest. I just wanted to have like a good time and just make friends, which obviously it wasn't the greatest time which I had there. ओके सर, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि स्प्लिट्स विला में अगर टास्क की बात करें तो किस तरह की आपके टास्क परफॉर्मेंस तो काफी अच्छे थे, लेकिन आपका बेस्ट टास्क कौन सा था? If you had to, I think it was the one which I performed with Nikhil. ओके इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि आपका कोई स्पेशल कनेक्शन कनेक्शन नहीं बन सका और निखिल के साथ कनेक्शन बना था बट वो भी वक्त आने पर टूट गया या खत्म हो गया, कनेक्शन नहीं बना था. इनफैक्ट आप दोनों गोल्ड विला में गए थे. यस, we did not like each other but the situation put us together. yes एक्सेप्ट गैरी, किसके साथ आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी? मैंने देव के साथ कोशिश की थी पर फिर देव बाहर चले गए थे और उसका कहीं ना कहीं रीजन भी मैं ही थी, जो कि आई थिंक दैट वाज लाइक माय कर्मा गेटिंग आउट ऑफ द शो लाइक आफ्टर लाइक 2 or 3 एलिमिनेशन. देव के कुछ टाइम बाद ही मैं मोबाइल मिला जा रही हूँ देव के पास फिर से. So I think I tried it with Dev but it did not work out and I did not want to like fake any connection towards anyone. And that's actually if I and Dev tried we would have like aced the show together, but yeah, I really fucked up there. Okay, so what was the one thing जिस वजह से आपके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बनाना चाह रहा था? Can you repeat the question? What was the one thing जिस वजह से आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनना चाहता था? पहली बात जब there was I gave my golden arrow to Gary और जब first day था तो मैंने किसी और लड़की से बात ही नहीं करी. I talked to Vyomenish, I talked to Gary और Kevin. I think Kevin से भी मैंने ज्यादा बात नहीं की. मैंने सिर्फ Vyomenish और Gary से बात की थी और मैंने किसी लड़की से बात करना कंसिडर भी नहीं करा. तो पहली बात क्योंकि मैंने किसी और लड़की से बात करी नहीं, तो obviously बात है कोई लड़का मुझे आगे से क्यों मतलब अप्रोच करेगा when I'm like not even interested. I was like sure listen, I think this is the one and I will like stick to him for the rest of the season. But apparently I think that was also where I again fucked up. मुझे और लड़कों से भी बात करनी चाहिए थी. मैंने गैरी के अलावा किसी और से बात करना कुछ कोशिश नहीं करी और फिर मैंने कुछ टाइम बाद ट्रेवॉन से बात करने की कोशिश करी थी, but Trevon liked Arushi, so Trevon and Arushi like paired up together. ओके आपकी डेट भी कंडक्ट की गई थी आपके और आरुषि की अभी रिसेंटली पिछले एपिसोड के पहले. तब गैरी आपसे मिलना नहीं चाहते थे, आपके साथ डेट पर जाना नहीं चाहते थे, क्या ऐसी बात थी फिर जिस इसके बाद गैरी आपसे आपके साथ टास्क किए और अगर आपको याद होगा उससे एक टास्क पहले गैरी ने मुझे काफी कुछ बोला था, ह्यूमिलेट किया था. तो पहली बात अगर वो उस डेट पे आती तो उन्हें सॉरी बोलना पड़ता था which is like against their ego जहां तक मुझे लगता था. and he would be like I'm not going to go to this girl. इसके बारे में मैंने बुरा बोला, मैं डेट में जाके से बेग करूं कि मुझे पिक करे. no I'm not going to do that. He went with Arushi and I think that was his karma that Arushi did not even select him. So yeah, that's probably why he did not came to me, क्योंकि उनको बहुत लगा होगा कि मैं क्यों जाऊंगा इसके पास, अभी तो मैंने इसे इतना कुछ बोला है, खुद शर्म आ गई होगी. तो इट्स लाइक ओके. सो स्प्लिट्स विला से क्या पाया और क्या खोया? I've like gained a lot of like, I think I did not lose anything to be honest. I've just gained a lot of things. For example, I've like gained a knowledge of like Avantika, it's like better to be
your person first than being someone else's person. Kabhi it's not about your friends, it's about you. You should keep yourself. तुम अपने आप को अगर पहली प्रायोरिटी नहीं रखोगे तो कोई तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखना पड़ेगा. पहली बात मैंने ये सीखी है. और दूसरी बात, मुझे काफी सारे लोग मिले हैं जो मुझे पसंद करते हैं फॉर हु आई एम. दे लाइक सी, क्योंकि मैंने बहुत गंदा करा है शो में. आई हैव लाइक लॉस्ट ऑल माय सेल्फ रिस्पेक्ट. I've like played like a dumbest person in the entire show. I've like done a lot of shit. Like if I see myself in the show, तो वहां पे मैं देख रही हूँ कि मैं कितनी बेवकूफों की तरह चीजें कर रही हूँ, मैं कितने बेवकूफों की तरह लोगों की बातें सुन रही हूँ. Like I'm always seeing them, and these people, they liked me and they're like, you know, Avantika, you've done these stupid stuff, but we still love you because we know you're capable of doing better things. You're capable of loving yourself. You're capable of a lot of things which are like, you know, better for you, and we believe you, we trust you कि तुम grow करोगी, and we want you to grow. So it's like amazing to see. That was like my lowest. That show was my lowest, and people liking you for something which you don't even like yourself for. क्योंकि अभी मैं अपने आप को शो देखती हूँ, I'm just cringing on myself. Like why would you say that? Why would you do that? और लोग मुझे उस तरह, they're like liking me at my worst. So imagine how much love will I get when I'll be, you know, in my best mode. ओके जिस तरह यू नो अपने आप को भी एक्सप्लेन किया कि आपने बहुत डम की तरह खेला है, जो भी है. ये लास्ट जब आप गैरी के साथ टास्क परफॉर्म कर रही थी, वर्ड्स बना रहे थे, ब्लाइंड फोल्ड्स लगा हुआ था गैरी के आंखों पर, तब ऐसी क्या चीज हुई जो यू नो आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे, या क्या दिमाग में चल रहा था? वो एक्साइटमेंट थी गैरी के साथ टास्क परफॉर्म करने की, या नर्वसनेस? एक्साइटमेंट. It definitely wasn't the excitement, because जब भी मैंने और गैरी ने टास्क परफॉर्म किया है और हम लोग को टास्क हारा है, तो हमेशा हम लोगों ने, गैरी ने मेरे साथ लड़ाई करी है, या तो फिर हम दोनों की कुछ लड़ाई होगी, और फिर हमारा, फॉर एग्जाम्पल, we did this entertainment task together, we lost it, and after that entertainment task, उस entertainment task में everything was fine. He told a lot of good things about how the connection is improving and all that stuff, and then like I don't know what happens, and then he's like, मुझे अवंतिका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये ऐसी है वैसी है, वो सो. So I was so shit scared कि अगर ये टास्क हम हारे अवंतिका, so he might again switch on you, and you have like legit no one to perform with. इसके बाद तो you're like not gonna make it up, and I wouldn't even blame him for it. I would like blame myself, because I gave him the power over stuff like this. So it's just I would like admit my fault that I really did not perform well in that particular task, and I was like, I don't know what was going through my mind, but that was like one of the worst time to lose a task. Okay. इसके अलावा आप स्प्लिट्स विला से वाइल्ड विला में जा रहे हो, बट गैरी की कनेक्शन ऑलरेडी समृद्धि वहां पर ही है, और यू नो काफी जानवी काफी गैरी को लेकर वो मतलब डेस्परेट है कि वो उसे स्प्लिट विला जाना ही है, बट आप दोनों साथ में वहां पर जा रहे हो. तो क्या रिएक्शन था जानवी का आप दोनों को वहां पर देखकर? Janvi and Gary, they've like been in love with each other from a long time, and I think it's good for them. I wouldn't like I never came in between them, to be honest. I just kept my point there, and even if like they want to pair up together, I will let them go. I would like let that man go, because I've honestly had enough of his like or I don't know if I should call it bullshit or not, but it's like a lot of ego, and I'm sorry, I cannot like tolerate being like, you know, treated the way. बार मुझे आप किसी और के ऊपर आप you like, you know, continuously leaving me for someone else, which is not really cool and respectable. So I'm just going to let him go if something like that happens in my villa. ओके आप स्प्लिट्स विला में देवाशीष के साथ ये ना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, बट देवाशीष ऑलरेडी यहाँ पर रिया के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे. तो यहाँ पर वाइल्ड विला में आने के बाद क्या लगता है, देवाशीष बनाएंगे आपसे कनेक्शन या नहीं बनाए? ऑनेस्टली वाइल्ड विला में जाकर मुझे खुद ही देवाशीष के साथ कनेक्शन मुझे बनाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बात आई हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग विद देवाशीष. और मैं देवाशीष से पहले ही क्लियर थी कि यू नो आई डोंट फील फॉर यू, आई डोंट लाइक यू इन दैट वे, एंड इवन इफ इट्स फॉर द गेम आई वुड नेवर फेक एनीथिंग. लाइक मैं कभी तुम फेक नहीं करूंगी कि तुम मुझे पसंद हो या ऑल दैट स्टफ. तो वाइल्ड में भी कहीं ना कहीं गिल्ट की वजह से आई विल नेवर लाइक ऑप्ट फॉर देवाशीष.
even though I would like to be friends with him, but not as a connection. ओके एक्सेप्ट दिस, बाहर आने के बाद स्प्लिट्सविला वाइल्ड विला से बाहर आने के बाद अब दोस्ती किसके साथ है और दुश्मनी किसके साथ निभा रहे हो पूरी तरह से? दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है, दुश्मनी तो मेरी किसी के साथ नहीं है. लाइक आई, या तो मैं किसी, अगर आई डोंट हेट एनीवन, इट्स जस्ट लाइक अगर हम लोग 30 दिन इतना लड़ाई करा है, इतना झगड़ा करा है शो में, तो हम फिर भी बाहर दोस्त हो सकते हैं. क्योंकि अभी पलक, अदिति, भूमिका, हाँ ये लोग से नहीं बनती थी मेरे शो में, पर अभी मेरी इनसे हफ्ते में 1-2 बारी फोन पे बात होती रहती है. वे लाइक cool, we're very good friends. In fact, I've made great friends with Palak, Bhumika, Aditi, 3 of them. Like I'm really good friends with them. On top of that, like Arushi and I never talked in the show, but currently I and Arushi are like very close. So it's not like कि अगर शो में भी ऐसी लड़ाई तो बाहर भी लड़ाई होगी. मेरी बाहर किसी से लड़ाई नहीं हुई है. निकिता से काफी ups and downs हुए हैं शो में, but still we're like, we don't like talk आजकल, because it's like I just told her कि let this show end and then we'll start talking again, because apparently कुछ नया नया दिखा देते हैं शो में कि ये भी हुआ है, वो भी हुआ है, दिमाग खराब हो जाता है. So it's like we'll just talk once the show is over. So it's like निकिता के साथ भी मैं अच्छे टर्म्स पे हूँ, ऐसी कुछ नहीं है कि लड़ाई है या कुछ भी है, but we're just building up on it again. So what was Nikita's reaction जब आप समर्थय को आपके साथ टास्क परफॉर्म करने के लिए वो किए थे, अप्रोच किए थे, और काफी सारे बवाल हो गए थे शो में, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी निकिता और आप लोग आपके बीच में शायद से, तो ये सब चीजों को किस तरह निकिता और आपने सॉर्ट आउट किए? Honestly, I don't really think so. उसमें मेरी कहीं पे भी गलती थी, क्योंकि निकिता ने मुझे खुद कहा था टास्क से पहले कि समर्थ्य के साथ पेयर अप कर अवंतिका. I want समर्थ्य to be safe, and if there's any way my connection be, and you're my best friend. And apparently she gave, you remember I was wearing this bracelet on the date which said blessed. So she gave it to me. She said that I'm blessed to have a friend like you. I want you to wear this on date and pick Samarthya. Okay. That's what she exactly said before the date. And after I chose Samarthya, she was like all crazy and talking, how dare you, backstabber. And I was so confused, like, where did this come from? Like, we decided mutually that you want me to perform with Samarthya. So it was very shocking for me too. और बाद में बहुत कुछ हुआ विला में जाके भी, उसमें बहुत सारी चीजें बोली, पर मुझे पता नहीं था वो सारी बातें मेरे बारे में हुई गई है. मुझे भी घर पे बैठ कर ही पता चला जब मैंने स्क्रीन में देखी कि oh my god, when this happened. क्योंकि उस टास्क के बाद मुझे लगा कि क्योंकि वो मेरे पास सॉरी बोलने आई थी, और वो मुझे सॉरी इस चीज के लिए बोलने आई थी कि उसने मुझे बैक स्टैबर बोला, और मुझे ये सारी बातें जो कमरे में बैठ के हुई थी उनके बारे में कुछ पता नहीं था मुझे खुद शो में जाके. क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया भी होता कि मेरे बारे में ऐसी बातें हुई है, तो obviously I wouldn't have like gone back and been friends with her on the show. शो के बाद भले ही हम दोस्त होते, पर शो के अंदर में फिर वापस उसके पास नहीं जाती अगर मुझे वो सब कुछ पहले से पता होता. पर मुझे उनमें से कुछ भी पता नहीं था, और मुझे लगा कि she's just sorry for calling me a backstabber, that's it. Okay. अभी गैरी से बातचीत होती है या नहीं होती है? No, we don't talk. So talking terms में भी नहीं है अभी? It's like we did not bother each other after the show. Okay, get together अब तक का हुआ है आपका किसी के साथ या नहीं हुआ है? नहीं, actually I stay in शिमला, और हाँ मैं शिमला में रहती हूँ और बाकी सारे मुंबई पुणे में रहते हैं, तो इट्स लाइक दिल्ली में रहते हैं, तो बहुत कैसे बहुत दैट्स लाइक इम्पॉसिबल टू हैव अ गेट टुगेदर अनलेस someone is like traveling to Shimla or something like that. Okay, how was your experience overall in Splitsvilla? It was actually a nice experience. To sum it up, it was everything, like a little hot, a little cold. It was like fine. I learned a lot of things, and I genuinely wouldn't change anything for, I wouldn't change anything, because it's like it's made me a person who I am today. It's like made me accountable for my own decision. So it's like I'm cool with it, and it's just like a phase of life, and I've just like moved on from it. Any reality show you would like to do in future? Honestly, right now, I don't really think so. I want to do any reality show, क्योंकि अभी एक ही करके मुझे इतना trauma मिल गया साथ में कि ऐसा होता है वैसा होता है. But in future also, if I like want to do some reality show, I might just audition for Ace of Space or something, because I think that's a cool show. Okay. Baki, I don't know if I'm gonna go and do some reality show, because reality show really scares the shit out of me sometimes now. कि यार ऐसा भी होता है, because I was very new to this. Like I'm never like, I've been to Mumbai once in 9th standard. That was like a week
trip. I'm like, I stay in Shimla. मैं चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ. That's like my world. I did not know कि इतना बड़ा है, ये होगा वो होगा, ऐसा होता है वैसा होता है. People are like so cruel, mean, bitter about a lot of things, and I was very like, it was very new to me. And now that I've learned a lot of things, I might just have that information and might just use it in any other show I do. But apparently right now I just feel like I need to like work on myself before stepping into another reality show. I need to learn how to be dependent on myself, और ऐसे भीड़ चाल में नहीं चलना है और ऐसे लोगों के बीच में नहीं छुपना है. ओके, अभी फिलहाल आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रही हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो या? आजकल right now I'm just doing my college. साथ में online college चल रहा है मेरा, और मैं YouTube कर रही हूँ आजकल. I'm like trying to focus on my YouTube channel, and yeah, I'm just trying to balance between my YouTube and college. Okay, lastly, जाते जाते fans and viewers को क्या कहना चाहोगे आप? I would just like to tell them that I am so thankful and grateful for all the support they've sent me. It's like so overwhelming. Har episode ke baad they write me this big paragraphs about how they love me and how I am, because I've had a lot of breakdowns in the show. Like I've cried a lot in the show. Yes. They're like, these people, they don't deserve you and all that stuff. They write so big things like you're really nice and it's their loss. It's none of your loss. You should be sad. And it's like very motivating, and it just makes me want to work hard so I can like provide them with good content. Okay.